सामान्य अस्वीकरण। वी आर ऑल सतोशी की आधिकारिक प्रस्तुति एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 2.0 में आपका स्वागत है। सभी प्रस्तुतकर्ता स्वैच्छिक आधार पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उनके विचार एवं राय आवश्यक रूप से संगठन के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। इस प्रस्तुति में सारी विषय वस्तु केवल सूचना हेतु है। हालांकि हमारा लक्ष्य सटीकता है, लेकिन कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं। प्रदान की गई जानकारी सामान्य है, न कि कोई वित्तीय या व्यक्तिगत सलाह। हम किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। हम जानकारी और सिस्टम प्रदान करते हैं, लेकिन हम किसी भी खरीदारी या सदस्यता का समर्थन नहीं करते हैं। आपके निर्णय केवल आपके हैं, इसलिए हम आपको गहन शोध करने की सलाह देते हैं। यदि संदेह हो तो किसी योग्य पेशेवर से मार्गदर्शन लें। आपकी यहाँ निरंतर उपस्थिति यह दर्शाती है कि आप इन शर्तों को स्वीकार करते हैं। आइए एफिलिएट मार्केटिंग का सावधानी पूर्वक और जिज्ञासा पूर्वक अन्वेषण करें। धन्यवाद। कानूनी अस्वीकरण। आप एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 2.0 पर वी आर ऑल सतोशी की आधिकारिक प्रस्तुति देख रहे हैं। वी आर ऑल सतोशी द्वारा प्रदान किए गए या बनाए गए सभी प्रोडक्ट, सेवाएं, उनके घटक भाग और संचालन विधियां और प्रणालियां पूरी तरह से वी आर ऑल सतोशी के हैं। सभी आईपी सुरक्षित है। कोई भी व्यक्ति यदि स्पष्ट अनुमति के बिना किसी भी प्रोडक्ट की प्रतिलिपि बना रहा है, वितरित कर रहा है या दोबारा बेच रहा है, वे गंभीर कानूनी परिणामों का जोखिम ले रहे हैं। वी आर ऑल सतोशी की प्रस्तुतियों का कोई भी अनाधिकृत प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग या सोशल मीडिया साझाकरण सख्त वर्जित है। बिना अनुमति के प्रस्तुतियों को डाउनलोड करना और पुनः अपलोड करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है और इसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं। धन्यवाद। देवियों सज्जनों नमस्कार। मैं अपनी लीडरशिप टीम की ओर से और सहयोगी पैनलिस्ट की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस हिंदी जूम सेशन पे, जो कि है इंडिया प्राइम टाइम। आज रात 9 बजे शुरू हो चुका है, थोड़ा विलंब हुआ है, इसलिए क्षमा चाहते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं और कई बार बताया भी गया है और आप लोगों ने लिंक पे भी देखा होगा, और कल इस बात को काफी बार खुद हमारे इंटरनेशनल ट्रेनर ऋषि जी ने दोहराया भी था कि आज बुधवार का दिन है और आज के दिन हम रूबरू होंगे उन व्यक्ति से जो कि क्रिएटर हैं वो रिक्रिएशन ऑफ हिस्ट्री, यानी कि BTC20 स्मार्ट चेन के, जो खुद एक टेक्नोप्रेन्योर हैं और हम सब के साथ आज अपडेट्स शेयर करेंगे। तो आइए मिलके स्वागत करते हैं शवेश जी का। शवेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका, मंच आपके सपोर्ट। थैंक यू अमित जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इंडियन प्राइम टाइम में। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अब तो आप लोग काफ़ी खुश भी होंगे, क्योंकि आप सभी की जितनी भी समस्याएं थी मेरी कोशिश यही थी कि दूर कर दी जाएं जल्द से जल्द, ताकि आप सब लोग बहुत मन और हिम्मत के साथ बढ़ चढ़कर सभी प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लें। जो भी चीज़ें आप लोगों को पीछे खींच रही थी या ऐसा लग रहा था कि आपके पास आपकी स्पीड स्लो हो रही थी, तो मैंने बूमरैंग के लिए रिफंड प्रोग्राम डिज़ाइन करके स्टार्ट भी कर दिया। और आप सभी को भी अपने डैशबोर्ड पे बूमरैंग 1.0 रिफंड वॉलेट भी दिख रहा होगा, जिसमें आपकी लाइसेंस की वैल्यू सब्ट्रैक्टेड बाय आपका विड्रॉल अमाउंट एफिलिएट साइट पे, उसका डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। यानी आपने जितना भी जो भी लाइसेंस परचेज किया, उसके बाद नेटवर्क में अगर कुछ नहीं कमा पाए तो आपको आपकी पूरी लाइसेंस की कॉस्ट रिफंड कर दी जाएगी। यानी अगर आपने $500 का लाइसेंस परचेज किया है तो आपके पास 500 BUSD अवेलेबल है विड्रॉल के लिए, जो कि हर एक दिन 1% के हिसाब से विड्रॉ होगा। अब ये बैलेंसेस, ये जो आपके पास वॉलेट में दिखा रहे हैं, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, अब हम इसको चेक कर रहे हैं, रीवेरीफाई कर रहे हैं बिफोर स्टार्टिंग द रिफंड प्रोसेस। तो अब आपको जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट सुनाई देगी वो ये पता चलेगा कि हर एक दिन आपको 1% आपकी
उसी वॉलेट में विड्रॉएबल BUSD आप विड्रॉ कर सकते हैं। BUSD क्या है? BUSD है USDT BTC20। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन भी शेयर करता हूँ सो दैट पूरी सभी को हर एक तरीके से क्लैरिटी डेवलप हो जाए। ओके, सो बूमरैंग 1.0 refund 1% every day for 100 days. 1 BUSD is equals to 1 USDT BTC20। अच्छा, तो ये मुझे आशा है सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप सभी को बिल्कुल बेसिक है। आप सब पहले USDT BTC20 जब डिपॉजिट करते थे तो वो भी SUSD बन जाता था, बट अब हमें सिस्टम में वॉस में मेजरिंग यूनिट अलग बनानी पड़ी USDT BTC20 की, क्योंकि अब हम DeFi सब्सक्रिप्शंस में या DeFi प्रोडक्ट्स में, जितने भी आपके DeFi प्रोडक्ट्स हैं वॉस में, जिसपे आप 3x की कैपिंग रिसीव करते हैं एफिलिएट साइट पे, और आपके पास बिटकॉइन कोड माइनर्स नोड 9 पे, और अब आपके बीच एक नया प्रोडक्ट आएगा डोडो। सो ये सारे प्रोडक्ट्स आप परचेज कर सकते हैं DeFi साइट पे वॉस की। DeFi प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए अब आपको 60-40 के रेशियो में USDT TRC20 और 40% USDT BTC20 चाहिए होगा, यानी 60 TRC20 और 40 BTC20। लेट से किसी को 9 पे कार्ड खरीदना है, 9 पे चॉइस कार्ड आपको खरीदना है, 9 पे चॉइस, तो 9 पे चॉइस $100 का है। इसके लिए आपको 60 TRC20 चाहिए और 40 BTC20 चाहिए। तो अब ये मैंडेटरी है सभी को DeFi साइड में परचेज करने के लिए या पैकेज लेने के लिए, कार्ड लेने के लिए, माइनर लेने के लिए, कि उसको 40% मैंडेटरी BTC20 में डिपॉजिट करनी है। इससे क्या होगा? जितने भी लोग आज से पहले से, जब से BTCC इकोसिस्टम चल रहा है, माइनिंग करते आ रहे हैं, ये आपके पास बहुत बड़ा मौका है कि आप उन नए यूजर्स को जो 9 पे जो डोडो और दोबारा से माइनिंग स्टार्ट करेंगे या और माइनर्स परचेज करेंगे, इन सभी को BTC20 एसेट से इंट्रोड्यूस कराओ। और ये पीयर टू पीयर एक्टिविटी आपकी एसेट्स को कैपिटलाइज करेगी। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है, और इससे हमारा BTCC इकोसिस्टम कितना स्ट्रांग है ये मार्केट में सभी को पता लग जाएगा। तो बूमरैंग रिफंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सभी के वॉलेट्स में बैलेंस डिस्प्ले हो गया है, विड्रॉल की फंक्शनैलिटी हमने टेस्ट कर ली है, हर एक चीज़ वर्किंग है। बस हम एक बार स्टैटिस्टिक्स यानी नंबर्स को दोबारा से रिवैलिडेट कर रहे हैं ताकि आपको रिफंड कम या ज़्यादा ना मिल जाए, और इसके बाद हम ये प्रोसेस शुरू कर देंगे। एक और अनाउंसमेंट है, क्योंकि आप सभी लोग प्रूफ ऑफ रिजर्व 1x
विड्रॉल का प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। तो ये विड्रॉल होगा रैप्ड BTC में, रैप्ड बिटकॉइन में। अब इस रैप्ड बिटकॉइन की यूनिट आपको अपने वॉल्ट होराइजन बैलेंस में देखने को मिल रही होगी। अभी भी हमारी टीम्स आपको मैनुअली ये बैलेंसेस रिफ्लेक्ट मतलब बैलेंसेस क्रेडिट कर रही है टीम, और आप सभी को अपने अपने अब वॉल्ट होराइजन बैलेंस वॉलेट में अपनी रैप्ड बिटकॉइन की अमाउंट में US डॉलर्स में आपको यूनिट मिल जाएगी। तो आज से जैसे ही आपके पास ये इतना रैप्ड बिटकॉइन आ गया, दैट मीन्स कि मार्केट में बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ रही है, तो आपके एसेट भी बढ़ रहे हैं। तो ये काम भी हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। होपफुली आज एंड ऑफ द डे, आज बिजनेस क्लोजिंग तक ये पूरा सारे बैलेंस पूरे कम्युनिटी को कवर हो जाएंगे, और उसके बाद हम इसको रीवैलिडेट करेंगे और विड्रॉवल प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। 7 दिन का विड्रॉवल प्रोसेस होगा, पहले जैसा बताया था, और उसी टाइमलाइन के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्रूफ ऑफ रिजर्व का विड्रॉवल, इसके बाद 9 पे कार्ड, वी आर वेरी क्लोज टू द लॉन्च, और मैं अब आप लोगों को एक लॉन्च डेट देने वाला हूँ आफ्टर हैविंग ऑल द अप्रूवल्स, क्योंकि अभी हमारी ऐप हर एक तरीके से रेडी है, सारा टेक बिल्ट है, बट कुछ ऐसे कंप्लायंसेस होते हैं जो वीज़ा के साथ हम रेडी प्रोडक्ट भी हमें प्रेजेंट करना पड़ता है। तो वो सारी वेरिफिकेशन, देयर इज अ टू वेरी मच अवेटेड ग्रीन लाइट फ्रॉम वीज़ा ऑन द रेडी प्रोडक्ट, क्योंकि फंक्शनैलिटी बनाने के लिए कार्ड जनरेशन करने के लिए, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमें APIs मिलती हैं। तो हमने प्रोडक्ट तो बना दिया, अब वो लोग प्रोडक्ट को वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या इसी कंप्लायंस के हिसाब से प्रोडक्ट को बनाया है। तो ये होने के बाद, जो कि हमने उसी गाइडलाइन को यूज़ किया है, तो इस अप्रूवल के बाद हम लोग लाइव चले जाएंगे एप्पल ऐप स्टोर पे और गूगल प्ले स्टोर पे। ये हो गई 9 पे की अपडेट्स। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, कैपिटल 3.0। तो कैपिटल 3.0 में आप सभी ने 19 सितंबर से पार्टिसिपेट किया। तो आपने जब 19 सितंबर से पार्टिसिपेट किया, तो आप सभी ने अपनी ROI यानी 3.0 टोकन्स एक्यूमुलेशन स्टार्ट किया। 3.0 टोकन्स आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं ROI में। ये सभी 3.0 टोकन्स आपकी एलोकेशंस आने पर कैश होने थे। तो मैंने पहले बताया आप लोगों को आज से 2 वीक पहले कि पहला एलोकेशन आएगा, और हम लोग 12 से 15 हफ्तों में, 2 हफ्ते पहले ही मैंने बताया था, पहला एलोकेशन हम एज अ कम्युनिटी वेलकम करेंगे, और आप सभी के 25 से 40% तक ROI आपकी कैश आउट हो जाएगी। बट बहुत अच्छा एलोकेशन एक और हमें मिल गया, और मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि इस एलोकेशन का TGE टोकन जनरेशन इवेंट नवंबर में ही है, यानी अगले महीने।
और प्रोजेक्ट में एलोकेशन हम बहुत बड़ा एलोकेशन लेना चाह रहे हैं। तो नवंबर में टीजीई यानी नवंबर मंथ में आपकी 19 सितंबर से आज तक और टोकन जनरेशन इवेंट तक जनरेटेड आरओआई पूरी वाइप आउट हो जाएगी। 100% आरओआई कैश आउट होने वाली है आप सभी की नवंबर में। तो मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया कुछ हो सकता था। और मैं डेली हर एक एस्पेक्ट पे सिर्फ इसी ऑब्जेक्टिव के साथ फोकस्ड हूं कि कम्युनिटी कहां से बेहतर तरीके से ज्यादा पैसा बने। समय लगता है इसमें, समय हमें भी लगा, मगर अब हम काफी प्रोग्रेसिव और फास्ट स्पीड से प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस बढ़ेगा और आप सब लीडर्स आगे रैंक्स में आगे बढ़ेंगे। आपकी हर एक टीम्स बेहतर तरीके से पैसा कमाएगी और आपकी जो भी फाउंडेशन आपने बिल्ड करी थी माइनिंग कर करके, आपकी सारी डीफाई साइड पे जो मार्केट में आपकी इन्वॉल्वमेंट थी वो बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि अब कैपिटल 3.0 से जो लोग ढेर सारे पैसे बनाएंगे वो सभी आपके साथ डोडो में इंडेक्स ट्रेडिंग करने के लिए जुड़ेंगे लोग। क्योंकि इंडेक्स ट्रेडिंग करने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होगी, वहां तो फ्लैश लोन नहीं मिलेगा, वो आर्बिट्राज नहीं है, वहां पे आपको पहले से रेडी रहना है ढेर सारे फंड्स के साथ इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए। तो कैपिटल 3.0 आपके लिए आपका लिक्विडिटी अरेंज करने का, लेवरेज बनाने का बहुत बढ़िया जरिया है। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे लीडर्स जो कि हमारे इकोसिस्टम में पहले दिन से काम कर रहे हैं और जो लोग बाद में भी जुड़े और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और अपनी टीम्स के साथ वेल कोऑर्डिनेटेड हैं, आप सभी लोग एटलीस्ट, मुझे लगता है कि इसमें कोई मेजर नहीं है कि लीडर्स आपके अंडर में कितनी बड़ी टीम है या कितनी छोटी टीम है। अगर सही ढंग से BTC 20 एसेट्स का इस्तेमाल करेंगे ना और कैपिटल 3.0 की स्ट्रेटजी को समझेंगे तो आप सभी एटलीस्ट $1 मिलियन तो बना लेंगे। अच्छे लीडर्स की बात कर रहा हूं मैं। और आपके लोग जिनको आप ज्वाइन कराएंगे वो तो एलोकेशंस लेते ही जा रहे हैं, उनको तो सारी चीजें मिल रही हैं, बट दिला कौन रहा है? वो आप दिला रहे हैं। अभी तक एफिलिएट मार्केटिंग करते आए, ज्वाइन कराते आए लोगों को, उसके बाद कोई इधर भागता है कोई उधर भागता है। नहीं, हमारे पास खुद के ही इतने प्रोजेक्ट्स हैं। तो तैयार हो जाइए, अगले 10 दिन में जितना भी हम कैपिटल 3.0 में रेवेन्यू जनरेट करेंगे उसका भी 35% इसी नवंबर एलोकेशन के लिए जाएगा। तो मेहनत से काम करिए। दिस इज माई कॉल फॉर कैपिटल टू द कम्युनिटी। और इस पूरे मूवमेंट में जब आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे तो नवंबर में ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत मेहनत के साथ, बहुत डेडिकेशन के साथ मेहनत करिए। अगले 10 दिन बहुत क्रूशियल है और आप सभी के अपलाइंस आपको सपोर्ट करेंगे और उनको मैं सपोर्ट कर रहा हूं। तो ग्रुप कॉल्स, मीटिंग्स सभी लोग ऑर्गेनाइज करिए अपने अपने लोकल एरियाज में, अपने अपने टाइम जोन्स में, अपने अपने ग्रुप्स के साथ मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करिए। अपने अपलाइंस को बताइए, वो लोग आपकी मीटिंग्स अटेंड करेंगे। इनफैक्ट मैं भी आपकी मीटिंग्स अटेंड करूंगा।
लेट्स डू इट, लेट्स वर्क टुगेदर। बहुत मेहनत के साथ काम करते हैं 10 दिन, और 10 दिन में पूरी इस एलोकेशन की पिक्चर बदल देते हैं अपनी कम्युनिटी की। बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत लॉन्ग टर्म, बहुत सस्टेनेबल। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ, काफी मोटिवेट होंगे आप लोग इसको जान के। तो प्रोजेक्ट बैक्ड है बाइनेंस लैब से, पॉलीचेन से, जो ये प्रोजेक्ट एलोकेशन दे रहा है, यानी फुली लिक्विड ऑन डे वन। ऐसा नहीं है कि लिक्विडिटी की कोई इसमें कोई चैलेंज होगा, नहीं। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये बाइनेंस लैब से खुद फंडेड है, यानी सिर्फ लिस्टिंग के लिए बाइनेंस ने इसको अप्रूव नहीं किया, फंडेड प्रोजेक्ट है बाइनेंस लैब से, पॉलीचेन से। और ये एलोकेशंस जो बाइनेंस ने, पॉलीचेन ने लिए हैं, ये एलोकेशन प्री सीड के बाद के एलोकेशंस है। तो मार्केट में प्रोजेक्ट लिस्ट होगा और किस मार्केट कैप पे होगा इसका तो मुझे प्रॉपर अंदाजा नहीं है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये सोलाना टाइप का रिटर्न तो देके जाएगा, जो वीसीज को मिला था सोलाना के समय। तो मेरी कोशिश यही है कि जितना मेजर एलोकेशन, वैसे तो बड़ा मुश्किल होता है, नवंबर में ही टोकन जनरेशन इवेंट है, बट मैं पुश कर रहा हूँ, और जितना बड़ा एलोकेशन हो सकेगा हम लेंगे, क्योंकि बड़ा ही लॉन्ग टर्म प्लान के साथ, वेस्टिंग पीरियड के साथ हम ये एलोकेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और इससे अगले 3 साल तक, ध्यान से सुनिएगा, अगले 3 साल तक लीनियर वेस्टिंग में हमें टोकन्स मिलते रहे। तो कैपिटल 3.0 बियर मार्केट में भी किस तरीके से काम करेगा, चलेगा, और लोग पैसा भी बहुत कमाएंगे बियर मार्केट में, उसका भी प्रॉपर इंतजाम हो गया है इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के साथ, क्योंकि ये मार्केट के यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स हैं। पहले ही दिन बताया था आप लोगों को, मार्केट में हजारों प्रोजेक्ट्स आते हैं, बट उनका आइडेंटिफिकेशन बड़ा डिफरेंट होता है। अभी जब आप लोग डोडो यूज करेंगे तो भी आपको पता चलेगा कुछ कितने नए नए टोकन से आप लोग रूबरू होंगे, या आपको पता भी रहता होगा तो आप कभी पता नहीं है कि कौन से एक्सचेंज पे लिस्टेड है, कहाँ से इसको परचेज करना है, बहुत सारी चैलेंजेस होती है। अभी आप लोग बहुत स्मार्ट होने वाले हो कैपिटल 3.0 के एलोकेशंस के साथ, और डोडो के साथ ट्रेड करते करते। तो जितना आप लोगों ने अपने पर्सनालिटी को पॉलिश किया था बूमरैंग के साथ, उसमें एटलीस्ट 5x की ग्रोथ आने वाली है विद कैपिटल 3.0 एंड डोडो। सो एंड 9 पे तो है ही आपके पास बेहतर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है। तो बढ़िया, बहुत मेहनत के साथ काम करिए, और नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों को होपफुली पूरी एनालिसिस दूंगा इस एलोकेशन की, कि कितना, किस हिसाब से हमने पार्टिसिपेट किया और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आशा है आप लोगों को सब समझ आया होगा, और ये भी पता चला होगा कि कंपनी आपके लिए कड़ी मेहनत से काम कर रही है। थैंक यू। Thank you, Shabazz. Thank you for your update. I think ये बहुत important है बताना कि टाइमिंग कि आप इस प्रोजेक्ट में कब आते हो is very important. जो आप पहली एलोकेशन लेके आए हो वो हम 100% टोकन्स स्वैप कर सकते हैं। उसके बाद जो एलोकेशन आएगी हम लोग कुछ कम like 50%, 10%, 20%, तो ये जो एलोकेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट, like so big and so huge। जितने हमारे पास टोकन्स होंगे
हम 100% स्वैप कर सकते हैं। उसके बाद इस प्रोजेक्ट का आपने बोला कि पोटेंशियल हो सकता है 20x हो, 30x हो, 40x हो। I I what think what I can what lucky what I can project is at least 80x, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, फंडेड है, और काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है विद गुड नरेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड इन द मार्केट। इमेजिन 80x अगर आपने पहले दिन से ये कैपिटल 3.0 को शुरू किया होता, जिस दिन फर्स्ट डे हमने लॉन्च किया, तो जब तक हमें डील मिलेगी, आपके पास अगर 2000 टोकन्स जमा है तो आपने उनको स्वैप किया। इमेजिन द पोटेंशियल। सो मैं सबको ये भी बताना चाहती थी कि हमने पहले अर्लियर लीडरशिप को भी इसी डिस्कशन ऐसी किया कि टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इस प्रोजेक्ट में। Yes, timing is very important. I have been working very sensitively with time, और मैं आप लोगों को इसीलिए सारी चीज़ें पहले से बता कर रखता हूँ। इनफैक्ट हम लोग सोलाना बेस्ड C30 डाउ टोकन्स की मिंटिंग भी स्टार्ट कर देंगे मंडे से, और आप सभी के पास टोकन्स आने लगेंगे, और टोकन्स आने लगेंगे तो आप वोटिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दोगे। इनफैक्ट जब पूरी तरह से डैप रेडी होगा और डाओ स्ट्रक्चर की वेबसाइट और ये सारी चीज़ें बनती रहेंगी, बट हम ब्लॉकचेन लेयर पे ये प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे टेक्निकली, ताकि हमें अब आगे फंड्स को दिखाने के लिए पता रहे कि इतने पार्टिसिपेंट्स हैं। तो हर एक यूजर नेम, वॉस पे जितने भी यूजर्स हैं, अपने हर एक यूजर नेम के साथ एक यूनिक एड्रेस, यूनिक सोलाना एड्रेस से आप वोट करेंगे। Amazing. Rashid, do you have any questions or? Thank you, Shavesh, for these wonderful updates. And it sometimes seems unbelievable. हम लोग कहाँ पे थे और कहाँ पे जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। We have always imagined कि हम लोग बुल रन के अंदर हम लोग हम लोग इतना बना लेंगे, उतना बना लेंगे। But through this proper channel that we are having, through the what you are creating right now, I think this is going to be such a huge opportunity for even a common person जो बिल्कुल लेमैन है, जिसको नॉलेज नहीं है क्रिप्टो का, जिसके पास में रिसोर्सेज नहीं है। यू आर मेकिंग इट पॉसिबल फॉर इवन मिनिमल पर्सन टू क्लेम बेनिफिट्स ऑफ दिस बुल रन। सो थैंक यू सो मच एंड हैट्स ऑफ टू यू। एंड अगेन आई विल अप्रिशिएट कि आपने जो रिफंड्स का जो कहा था कमिटमेंट, दैट हैज़ बीन फुलफिल्ड। सो बुमेरांग के ऊपर लोगों का एक क्वेश्चन है, क्लैरिटी ऑन कि हमें वो 500 का हमने टीआरसी में डिपॉजिट किया था एंड देन हमें दिया जा रहा है इसमें। सो आई वुड लाइक यू टू एम्फेसिस ऑन हमने BTC20 में विड्रॉवल्स क्यों दिया एंड हाउ इट इज़ गोना कंट्रीब्यूट टू द इकोसिस्टम। हम लोग इससे पोटेंशियली BTCC के ऊपर कितना ग्रो कर सकते हैं। आई जस्ट वांट यू टू ब्रीफ अस अबाउट दैट। ये एक बहुत ही नहीं, इंपॉर्टेंट डिसीजन आपने लिया था BTC20 USDT का। बिल्कुल बिल्कुल, जिनको रिफंड दिया उनको ऐसा नहीं है कि उनको ज़रूरी है हमारे इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करने की, उनको रिफंड मिल गया, वो लोग एग्जिट कर सकते हैं, अपने अपलाइन से बात करें, अपने USDT BTC20 को बेच दें, पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म पे जाएं, अपने BTC20 एसेट को बेच दें। तो हमने आपको रिफंड दिया, रिफंड लेने का एक तरीका भी बता दिया आपको। अब देखिए, पहली बात तो इस पूरे प्रोसेस से हमारा एज अ इकोसिस्टम क्या बेनिफिट है, कितना बेनिफिट है, ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। हर एक लीडर जो इस पूरे इकोसिस्टम में काम कर रहा है उसको पहले से अंदाजा है कि 60-40 होने से क्या क्या बेनिफिट मेरे पास आ गए। छोटे से छोटा लीडर, अगर आप पहला साइन अप भी करने जा रहे हो तो भी आप BTC20 एसेट अपने नए रेफर्ड यूजर को बेच रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि लीडर्स का फायदा है और सिर्फ टॉप लीडर्स पैसे बनाएंगे, नहीं, हर एक यूजर
जो कि नए यूजर को साइन अप कर रहा है, वो BTC20 एसेट उसको बेचेगा। तो इतना कंजम्पशन और सप्लाई बहुत थोड़ी है। देखता हूं आप लोग मैनेज कैसे करते हो। आई थिंक दैट इज गोना बी अ चैलेंज कि यहाँ पे लोग इतना आना चाहते हैं, वी आर गोना हैव सो मेनी न्यू मेंबर्स एंड इवन द लीडर्स जो यहाँ वहाँ भटक गए थे, अब दोबारा पूछ रहे हैं भाई हो गया क्या, कैसे हुआ। सो आई थिंक दैट इज अमेजिंग शवेज। एंड ऑन कैपिटल 3.0 हमारा ये जो नेक्स्ट अलोकेशन आ रहा है, यू हैव मेंशन कि हम लोग ने जितने भी टोकन बाय देन अक्यूमुलेट कर लिए, सो 100% वी विल बी एबल टू यूटिलाइज, इज इट यस, सो? यस, करेक्ट। ओके। और इसके बाद हमारा जो कंपाउंडिंग रहेगा वेस्टेड कैपिटल के ऊपर, वो तो चलता ही रहेगा, एंड वी विल मूव फर्दर टू द अलोकेशंस एज वेल, नेक्स्ट अलोकेशंस एज वेल। एग्जैक्टली। एंड यू हैव आल्सो मेंशन्ड ATX। यस, ये एज अ ओवरऑल प्रोजेक्ट, जो भी उनका प्रोजेक्शन है, जो भी हमें प्रोजेक्ट की डिटेल्स देखकर लग रहा है कि 3 ईयर की वेस्टिंग पीरियड है। तो अगर 3 ईयर में हम साथ मिलके टोकन्स को पार्शियली होल्ड करके या पूरी तरह से होल्ड करके उस पूरे प्रोसेस का पार्ट बनते, तो एटलीस्ट 80x तक एग्जिट करना चाहिए हम लोगों को, और क्या। सो आई बिलीव कि हमारा कमिटमेंट कहीं ना कहीं तो 5x का है। अगर एक ही प्रोजेक्ट से 80x, देन ऑल दी अदर एलोकेशंस एंड एवरीथिंग, तो हम लोग बेरिश मार्केट में भी हम लोग जो है हम लोग सस्टेन कर पाएंगे, इज इट सो? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि इन ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, इसकी लीनियर वेस्टिंग है अगले 3 साल की। तो आप लोग किस तरीके से उसका फायदा उठाओगे, वो आपको एलोकेशन के बाद पता चलेगा। और आप ये समझिए कि आपको बियर मार्केट में भी टोकन्स आते जा रहे हैं। तो बियर मार्केट में भी इस तरीके से आप लोग प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करोगे, जो कि आपको अगली बुल रन के लिए प्रिपेयर करेगा। और जो लोग हमारे साथ पैसे बनाएंगे बुल मार्केट में, ढेर सारे, वो लोग हमारे साथ बियर मार्केट में क्या, अगली बुल मार्केट नहीं भी आएगी तो भी हमारे साथ काम करते रहे। यस। हम खुद से बुलिश इकोसिस्टम बनाएंगे। हम BTCC से बुल मार्केट लाएंगे। सो आई बिलीव शवेज, ये आपने बहुत ही ब्यूटीफुली पूरा स्ट्रेटेजाइज किया है, एंड दिस इज गोना बेनिफिट द एंटायर वास्ट कम्युनिटी टू सच एन एक्सटेंट। इट इज लाइक मैंने पहले ही कहा था कि इट इज अनबिलीवेबल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग टाइमलाइन को खाली दोहराते हैं शवेज। सो होपफुली 9 पे हमारा इस वीक में आ जाना चाहिए, एप्लीकेशन लॉन्च हो जाना चाहिए। कोशिश है मेरी, मगर क्योंकि मैं अभी डेट नहीं दे सकता, क्योंकि पहले वीज़ा से या ये सारी चीज़ें अप्रूव हो जाएं। हमारी तरफ से हमने टेक बना के रेडी कर दिया। अब इस कंप्लायंस में, चेक्स में टाइम लगता है, जो भी समय लग रहा है। जैसे ही मुझे कंफर्मेशन आएगी, मैं आप लोगों को एक डेट दे दूंगा। ग्रेट। बुमेरांग इज सॉर्टेड। खाली कम्युनिटी मेंबर्स को बैक ऑफिस में चेक करना है इफ देयर 1x इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड प्रॉपरली, एंड प्रूफ ऑफ रिजर्व जो आप कल तक शायद से सभी को मैनुअली हो रहा है, इस वजह से कल तक सबको अपडेट हो जाएगा, इज इट करेक्ट? यस, करेक्ट। ओके। कैपिटल 3.0 की सेल्स ऑलरेडी चालू है, एंड होपफुली बाय एंड ऑफ नवंबर वी विल हैव फर्स्ट लोकेशन। यस, यस, दैट इज द गोल। और पहली एलोकेशन पे आप लोगों को, सभी लोगों को मार्केट में कैपिटल 3.0 की सेल्स नहीं करनी पड़ेगी पहली एलोकेशन के बाद। खुद ब खुद ये सेल्फ सेलिंग कॉन्सेप्ट है, अभी भी है, बट जो कन्विक्शन आएगा पहली एलोकेशन के बाद, उससे फिर आप लोग बिल्कुल स्काई रॉकेट हो जाओगे। एब्सोल्युटली। एंड पीपल आर ऑल्सो एक्साइटेड अबाउट डोडो। सो डोडो जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2 से 3 हफ्तों में। देखिए, डोडो के लिए पहले तो ट्रेनिंग देनी है सभी को। किसी को अभी पता ही नहीं है डोडो है क्या प्रोजेक्ट। एनिमल बिल्कुल। शरीर जब हम लोग मीटिंग में जाते हैं तो लोगों को तो अभी भी यही लग रहा है कि फ्लैश तो मिल जाएगी। नहीं, नहीं,
बिल्कुल भी नहीं। डोडो एक ट्रेडिंग टूल है जिसमें आपको फ्लैश लोन नहीं मिलती है, जिसमें आपको अपने फंड्स को यूज करके इंडेक्सेस परचेज करने पड़ते हैं। मैं अच्छे से पहले ट्रेनिंग देना चाहता हूँ और प्रोडक्ट के की जो सेंसिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो बताना चाहता हूँ, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप लोगों से ज्यादा, मैं आप फिर से दोहराता हूँ, नेटवर्क में जो लोग पैकेजेस बाय करेंगे, सब्सक्रिप्शन बाय करके डोडो यूज करेंगे, आपसे ज्यादा इसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक का फुटफॉल होगा इस प्रोडक्ट में। ये ऐसा प्रोडक्ट है, मतलब आपको देखने में पहले दिन से आपको दिखेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वॉल्यूम। ग्रेट। एंड बूमेरंग 2.0 की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बूमरैंग 2.0 की मैं एक डेवलपमेंट की टाइमलाइन और एक प्रेजेंटेशन जो कि हमारी टीम ने क्रिएट करी है, टेक टीम ने, कि किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा और किस तरीके से फंक्शन करेगा। अच्छा, और भी बेहतर, जैसे आप लोग पॉलीगॉन पे यूज कर रहे थे उससे बहुत बेहतर फंक्शनैलिटी पे हम BTC20 स्मार्ट चेन पे बूमरैंग 2.0 बना रहे हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, मुझे एटलीस्ट 1.5 महीने का समय दीजिए ये प्रेजेंट करने के लिए। प्रोडक्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, किस तरीके से काम करेगा, कैसे आप लोगों को आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी, और क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा डेवलपमेंट में भी, फाउंडेशन में भी। आपने ऑलरेडी 100 डेज के अंदर रिफंड दे दिए, सो आई थिंक द मिनिमम दैट वी कैन डू इज थैंक यू। एंड आप चाहे जितने दिन लीजिए बूमेरंग 2.0 के लिए, हमें वी गॉट नो प्रॉब्लम विद दैट। आई थिंक मच इज सॉर्टेड विद दिस एंड इट रिलीव्स सो मच प्रेशर फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम द कम्युनिटी मेंबर्स, लीडर्स, एवरीबॉडी। आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है रशीद जी, मेरी बात सुनिए, सब लोग एक बार ध्यान से समझिए ये। जैसे ही डीफाई साइड पे BTC20 एसेट के बिना ज्वाइनिंग नहीं होगी, एब्सोल्युटली, तो आपको BTC20 एसेट कमाने का एक जरिया ढूंढना पड़ेगा, जो कि बनेगा बूमरैंग 2.0। एंड रिफंड्स में बाय आप लोग डिफॉल्ट आ रहा है नहीं अभी। आप लोग अभी नहीं आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा, जब आपके BTC खाली हो जाएंगे मार्केट में बेच Yes. बेच, तब आप मेरे से क्या, आप डेली डेली आके हवन और यज्ञ कराओगे कि बूमरैंग 2.0 बन जाए, ताकि मेरे पास एक कैश काउ रेडी रहे BTC20 एसेट अपनी टीम्स को प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि अब टीम्स ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं, लोग कार्ड्स परचेज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि BTC20 मेरे पास खत्म हो गया है, और कुछ लोग प्रीमियम पे उसको 1.5x पे बेच रहे हैं। तो आप सभी को बूमरैंग 2.0 एक वरदान की तरह दोबारा से मिलेगा। एंड दैट विल बी एब्सोल्युटली इन हाउस, हमारी ब्लॉकचेन, हमारा प्रोडक्ट, हमारी कम्युनिटी। वाओ, फैंटास्टिक। सो स्कैर्सिटी आने दीजिए मार्केट थोड़ा सा तो पता चलेगा। सो मेरे ख्याल से इसके अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट जो होगा नोड्स वालों को होगा, वैलिडेटर्स वालों को होगा। एंड क्विक अपडेट ऑन नोड्स, शवेश, नेक्स्ट पैकेजेस। तो नोट्स अभी एक्टिव हैं, अभी अवेलेबल है, और नोट्स आप लोग परचेज कर सकते हैं 60-40 के रेशियो में। अब हम प्राइस अपडेट करेंगे नेक्स्ट, इस मंथ की नोट सेल्स के क्लोजिंग के बाद। अब क्योंकि BTCC प्राइस भी, वैल्यू भी आप लोगों को डिफरेंट दिखने लगेगी, लोगों ने स्ट्रेटजीज बनाई हुई है कि बूमरैंग रिफंड से BTCC परचेज करेंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तब उसको बेचेंगे। तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज मार्केट में लोग बना रहे हैं, आप लोग भी बना रहे होंगे अपनी टीम्स के साथ, और इससे हमें BTCC के रेट्स बढ़ते हुए दिखेंगे, और फिर हम नोट्स के भी प्राइसिंग इंक्रीज कर देंगे। ऑफ कोर्स। सो ऑल द कम्युनिटी मेंबर्स, जो भी गेस्ट स्पेशली यहाँ पे आए, जो पहली बार सुन रहे हैं, तो आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे, दिस इज द गाय हु हैज फुलफिल्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक बार नहीं, टाइम्स एंड अगेन ही हैज प्रूवन। जो एग्जिस्टिंग लीडर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, वो तो दिलो जान से जानते हैं क्या है, हम लोग किस चीज़ का हिस्सा है। लेकिन जो यहाँ वहाँ भटक गए हैं लीडर्स, मैं उनको फिर से दोबारा इनवाइट करना चाहूँगा, बिकॉज वी हैव नाउ एवरीथिंग एंड वी आर नॉट लेफ्ट विथ एनी एक्सक्यूजेस। थैंक यू शवेश।
for everything that you have done. Thank you. Over to you, Lucky. Chavez, एक क्वेश्चन का बहुत आया है from obviously you're gonna have to talk about this in UK prime time as well. कि POR का 1x कैसे कैलकुलेट हुआ है? Because there's so much confusion amongst people. ओके, सो लेट्स से आपने $100 डिपॉजिट किया पैकेज परचेज करने के लिए उस समय, और आपने $20 का विड्रॉवल ले लिया, तो 100 माइनस 20 इज 80, 80 इज योर 1x। इस तरीके से 1x का कैलकुलेशन हुआ है। आप सभी के पास आप अपनी माइनर्स वाली हिस्ट्री पे जाएंगे, सब्सक्रिप्शन पेज पे, तो आपको अपने पैकेजेस दिख जाएंगे जो आपने पहले परचेज किए होंगे उसी पेज पे। वहां से अपने विड्रॉवल्स को जाके सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, वही वैल्यू निकल के आ जाएगी। So और अगर Chavez, sorry, go on. अगर किसी को लगता है कि उसकी कैलकुलेशन गलत है, तो तुरंत अपने अपलाइन को अपनी डिटेल्स के साथ स्क्रीनशॉट और यूजर नेम के साथ संपर्क करिए। So जो भी पैकेजेस हमने जब हमारा माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया उससे पहले, बिफोर द ओल्ड वाज क्लोज्ड, जो भी पैकेजेस लिए थे लोगों ने वो एड अप करके देखें और फिर देखें कितना विड्रॉ कर लिया उससे, तो वो आपका 1x बचता है। यस, वो आप देखेंगे अपने माइनर्स सब्सक्रिप्शन इस पेज पे। Yes, and the 1x balance shows in the POR part, right? Vault Horizon Balance Wallet। And वो हम लोग withdraw कर सकेंगे on wrapped BTC। Yes, on wrapped BTC। वो प्रोसेस कितने दिन का है शवेज? How long is that taking? अभी हम आज से जब क्रेडिट स्टॉप करेंगे या फिनिश करेंगे, तो हम 7 days ऑफ वेरिफिकेशन रखेंगे। कम्युनिटी कंसर्न रेज करेगी अगर कैलकुलेशंस इनकरेक्ट है, तो इस 7 दिन के बाद हम लोग, जैसा कि टाइमलाइन दी थी पहले भी मैंने, जिस दिन बताया था, जिस दिन अनाउंस किया था, तो इस 7 दिन के बाद हम रैप BTC कॉन्ट्रैक्ट भी देखेंगे इसी 7 दिनों में। BTC 20 स्मार्ट चेन पे फ्राइडे को मैं जूम में आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा ये सारी चीज़ें, और उसके बाद हम विड्रॉल प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि विड्रॉल आपका पार्ट्स में आएगा, ये आप पूरा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं रैप BTC अपना, और अपने पास होल्ड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं। तो विड्रॉवल्स के लिए हम 14 दिन का समय देंगे पूरी कम्युनिटी को, और उसके बाद विड्रॉल पूरा होने के बाद हम एक्चुअली बैकएंड पे बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, 4-5 कंपनियां चल रही हैं तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा साफ सफाई हो जाए और ये सारे डिसकंटिन्यूड प्रोजेक्ट की वॉलेट्स एक्चुअली निकल जाए, तो सिस्टम पे लोड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि साइनअप्स बहुत आते हैं, और तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम इसको 14 डेज में क्लोज कर देंगे। अमेजिंग। सो हमारे पास फिर रैप्ड BTC आ जाएगा, देन हमारी चॉइस है, हम उसको रखें, वेट करें जब 100,000 तक पहुंचेगा बिटकॉइन, तब तक रखें, बेचें, जो करना है लोगों की मर्जी। स्वैप मेरी विद सलाह BTC ये है कि लकी कि आप सभी लोग उससे BTCC परचेज कर लें, क्योंकि जो ग्रोथ होगी BTCC की और जो ग्रोथ होगी बिटकॉइन की, उसमें और BTCC की ग्रोथ में बहुत एक्सपोनेंशियल डिफरेंस है। Yes, we saw that last time you did the calculations. It was a big difference. Okay. तो that's it. So P2P platform Chavez की हमारे जब कार्ड लॉन्च होगा उसके बाद आएगा, right? Yes, yes. तो अभी जिन लोगों ने DeFi प्रोडक्ट सेल करने हैं, जब बाय करने हैं, वो अपने अपलाइन से कांटेक्ट करके BTC 20-40% ले सकते हैं। Yes, yes.
और आपने कहा था कि also in the meantime हमारे पास ऑप्शन होगा वाज में, जहां से लोग परचेस कर सकते हैं BTC20। यस यस, वॉस में हम आपको आपकी एसेट पेज पे एक लिंक दे देंगे, एक बटन दे देंगे, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ब्रिज तक ले जाएगा और आप अपना वॉलेट कनेक्ट करके अपना मेटामास्क एड्रेस एंटर करके USDT BTC20 परचेज कर सकते हैं। और उससे आप फी चार्ज करेंगे 3%। 3% विल बी द फी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सभी लीडर्स मार्केट में बिना फी के USDT BTC20 प्रोवाइड करें। अगर जिसको फी पे करनी है तो वो हमसे ऑफिशियल सोर्सेज से खरीद सकता है। बिल्कुल, amazing. Thank you, Shabazz. I think that's all from me. Anyone else has any question, Rajiv or Pankaj ji, then please ask. Otherwise, Amit ji, that's it. बस थैंक यू शावेद जी, काफी अच्छे Thank से you. आपने एक्सप्लेन किया। एक सवाल है, टेक्निकल है, बेसिकली कई बार हम लोग सुन रहे हैं वेस्टिंग पीरियड, थोड़ा सा जी जी, लीनियर वेस्टिंग को एक्सप्लेन कर देंगे, थोड़ा लाइट डाल देंगे उस पे। बहुत बिल्कुल लोग कुछ भी नहीं, को नहीं पता होगा, मेरे को भी उतना पता नहीं है। बिल्कुल कुछ समझने की जरूरत नहीं है उसमें। आपसे आपको मुझे 100 टोकन्स देने हैं। अब मैंने बोल दिया कि ये 100 टोकन मैं आपको एक साथ नहीं दूंगा, 10 महीने के ड्यूरेशन में दूंगा। तो आपको ये टोकन्स छोटी छोटी बैचेस में 10 महीने तक मिलते रहेंगे। यही है वेस्टिंग। मतलब ईएमआई टाइप हो जाएगा। EMI टाइप हो जाएगा। EMI तो आप देते हैं ना, आपको मिलती नहीं है, आप बैंक थोड़ी है। हाँ, अब आपको, कंसेप्ट। हाँ ओके, मतलब इक्वली हो जाएगा, हर महीने ऐसा कुछ होगा, एक हाँ, कोटा होगा इतना, आपको आप ले सकते हो प्रोजेक्ट टोकन, राइट, समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पे इसका इम्पैक्ट कम ही रहे और डिपेंडेंसी ना रहे, बट इससे बहुत फायदा है। हम एज अ डाओ कितने महीनों तक सभी के टोकन्स कैश आउट करते रहेंगे। तो ये समझिए, अगर 36 मंथ्स का वेस्टिंग पीरियड मिलता है इस प्रोजेक्ट से, तो अगले 36 मंथ्स तक हमारे पास ROI कैश आउट करने का एक सॉलिड कंसिस्टेंट मैकेनिज्म है सभी के लिए, और प्राइस भी बढ़ रहा है एसेट का। तो क्या है कि उतनी वैल्यू भी कैश आउट होती जा रही है, और जो लोग पहले पहले बैच का हिस्सा बन गए, वो बाहर लेने के बाद उसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा, आई थिंक इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता था। एक इन कैश करने का तरीका हो गया, राइट, रेगुलर बहुत अच्छा, बेसिस। रेगुलर बेसिस पे। और दूसरी दूसरी एलोकेशन जो दिसंबर में आएगी, उसमें भी 15 महीने की वेस्टिंग है। तो आप लोगों के साथ तो बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स, हम सभी की किस्मत अच्छी है और अच्छे फंड्स के साथ हम काम कर रहे हैं। तो हमारे जो GPs हैं वो काफ़ी अच्छी प्रोजेक्ट्स हमें पिच कर रहे हैं, विच इज़ गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू पंकज जी। Right, All Amit ji, right, I let's think, close. yeah, Oops, sorry. no worries. तो थैंक यू। आज के पूरे सेशन पे साथियों, अगर आपने गौर किया होगा तो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और उसको हम कहते हैं समय, या यूं कहिए टाइम। तो कोई कहता है कि लकी कौन है, ऑफ कोर्स एक हमारी लीडरशिप है, उनको छोड़ के लकी कौन है? तो कहते हैं कि लकी वो है जो लक उन्हें फेवर करता है, जो प्रिपेयर्ड रहते हैं किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। तो फिर आ जाता है कि भाई उसके लिए सही जगह मौजूद होना जरूरी है। तो उसका भी उदाहरण देता हूँ। कहते हैं कि बिल गेट्स ने छोड़ दी थी कॉलेज, लेकिन कमाल की बात है कि उन्होंने कंप्यूटर्स ज्वाइन किया था। तो क्या वो लक था? ओके। या ये लक है कि वो लोग जो यहाँ 19 सितंबर से ज्वाइन किए थे, उनको ज्यादा टोकन्स मिलने वाले हैं। क्या ये लोग सही समय पे सही टाइम पे पहुंचे थे? क्या वो लक है? या ये लक है
कि आज ये अनाउंसमेंट हुआ है हम सबके सामने और आप आज डिसाइड करेंगे कि हमें यहाँ पे तुरंत ज्वाइन करना है। तो लक वो बनेगा कि आप डिसाइड करेंगे, ज्वाइन करेंगे। हर एक सवाल का एक ही जवाब आएगा, समय। कुछ समय पहले जब यहाँ बात करते थे तो लोग कहते थे कि पता नहीं क्या खा के आते हैं, क्या बोल रहे हैं, और आज सडनली उनको ये दिख रहा है कि सब कुछ हो रहा है। और आज फिर से कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई पता नहीं क्या खा के आते हैं जब तक हजम नहीं हुआ है, और कुछ दिनों के बाद वही बोलेंगे कि भाई क्या समय था, हाथ से चला गया। समय आपका है, समय हमारा है, डिसीजन आपका है, डिसीजन हमारा है। लीजिए, फैसला लीजिए, फैसला कीजिए, क्या आप सही समय पे मौजूद रहेंगे या वक्त हाथ से निकल जाएगा। इसी सोच के साथ आप सभी को मैं ये आशा करता हूं कि आप सब खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे रात 9 बजे सवाल जवाब के सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर एंड टेक केयर। Atentos, ChatGPT acaba de recibir una de sus mayores actualizaciones a nivel de interfaz de usuario. Estamos hablando ni más ni menos de la nueva actualización que incluye la herramienta Canvas. Una funcionalidad que cuando la vi pues pensé, vale, han copiado ya por fin los artifacts de Claude de Anthropic, que sabemos que es esta funcionalidad tan maravillosa a nivel de interfaz de usuario que lo que permite es abrir una ventana lateral donde podemos ir examinando pues el código que estamos generando, el documento que estamos creando, podemos previsualizar incluso ese código que hemos creado a ver cómo se vería cuando lo ejecutemos y en definitiva pues es una demostración de cómo podemos sacarle más rendimiento a la inteligencia artificial a partir de crear mejores interfaces de usuario. Y como digo, pues lo que pensaba que OpenAI había hecho en este caso era copiar esta funcionalidad y ya está. Pero no, la cosa no se queda ahí porque han ido más allá. Y aunque en principio nos pueda recordar a los artifacts de Claude, en este vídeo de hoy vais a comprobar cómo el ChatGPT Canvas pues tiene mucho más que aportar. Y esta es una funcionalidad a la que todos tendríais que tener ya acceso y que podéis acceder a través del selector de modelos. Si venimos para acá, GPT-4o with Canvas es la funcionalidad que tenemos que activar y vais a comprobar, bueno, que la herramienta es exactamente igual que el ChatGPT normal. ¿Y dónde está la diferencia? Pues la vamos a encontrar cuando le pidamos alguna tarea de escritura o alguna tarea de programación, donde por ejemplo le digamos, oye, escribe un guión sobre el descenso del gradiente. Vamos a darle a Enter y en este caso vais a comprobar cómo, ojo, se nos abre un panel dentro del chat y automáticamente se convierte en un panel lateral que se nos va a situar a la derecha, donde vamos a tener por un lado el chat habitual con el que vamos a interactuar con ChatGPT y a la derecha el contenido que se ha creado, ¿vale? Esto es exactamente calcado, copiado de los artifacts de Claude, ¿vale? Entonces vemos que nos dice, claro, aquí te dejo un guión que explica el concepto del descenso del gradiente de manera accesible y entretenida. Podemos clicar aquí, que nos mostraría el contenido del documento, y luego el chat pues sigue de forma proactiva proponiéndonos cosas. ¿Te gustaría que adapte algún elemento, añadir más detalles técnicos? Es decir, ¿quieres seguir trabajando sobre este documento? Y al mismo tiempo, pues lo que tenemos a la derecha es el documento que se ha creado, ¿no? Entonces yo en este caso veo que ha creado un guión, pero pensado más en un guión más cinematográfico, ¿no? Veo que hay un narrador, que hay varios personajes. No era esto lo que estaba buscando, así que le puedo pedir que me lo cambie. Pero estaba pensando más bien en un guión para YouTube donde yo sea el narrador. Le damos a enviar y efectivamente vamos a ver cómo esta animación de edición pues empieza a modificar todo el documento y nos empieza a dar pues una versión más cercana a lo que nosotros queramos. Esto podría ser un proceso iterativo donde poco a poco vayamos acercándonos más al documento que queramos. Y en este caso pues podemos ver que efectivamente pues tenemos un documento que se aproxima mucho a lo que nosotros queremos, ¿no? Una especie de guión que podría servirme para hacer un vídeo de YouTube. Entonces, ¿dónde está la novedad respecto a Claude, a los artifacts que ya nos proponía la empresa de Anthropic? Pues vais a ver que en este caso toda esta interacción de escríbeme un guión, poder visualizarlo, se va a parecer muchísimo, pero aquí hay una diferencia fundamental. Y es que aquí, si os dais cuenta, lo que tenemos es un documento estático que yo no puedo modificar y sin embargo en ChatGPT lo que nos están proponiendo es un editor de texto. Yo puedo entrar a este guión y añadir mis propias modificaciones. Por ejemplo, podría venir aquí y decir, oye, que esto quiero que esté en inglés. De hecho, se lo podría pedir a ChatGPT, ¿vale? Le damos a enviar y vemos cómo acaba de hacer una modificación en concreto
dentro de la línea que yo he seleccionado. Ahora, si quisiera, pues podría venir para acá y escribir un párrafo que fuera una metáfora entre el descenso del gradiente y bajar una montaña, y ahora le voy a pedir a ChatGPT que desarrolle este párrafo y vamos a ver que automáticamente nos crea un párrafo sobre el concepto que nosotros le hemos pedido. Quien haya trabajado con Notion sabrá que esta funcionalidad, de forma muy parecida, estaba ya creada dentro de esta herramienta con Notion AI, pero ahora la tenemos de forma nativa dentro de ChatGPT, lo cual hace que todo este Canvas sea una herramienta súper útil. Y la cosa no se queda solamente en esto, porque además tenemos aquí abajo pues un conjunto de herramientas que nos van a facilitar mucho el trabajo a la hora de acceder pues a cosas que son habituales. Quiero que el texto me lo hagas más largo, que me lo hagas más corto, que me lo hagas con un tono más complejo, más sencillo. Todo esto nos lo facilitan herramientas como las que tenemos aquí. Por ejemplo, quiero que el guión tenga una longitud más corta, pues con este slider podemos seleccionar pues que el tamaño sea más corto y automáticamente, como si se lo hubiéramos pedido en el chat de la izquierda, pues nos va a volver a redactar todo este guión, pero en este caso pues con una extensión más corta. Oye, que el nivel del guión se está quedando demasiado elevado y queremos hacerlo un nivel un poquito más bajo, pues podemos ajustar aquí el nivel de lectura y fijaos cómo nos hace una escala con diferentes niveles académicos, y en este caso pues vamos a explicar el descenso del gradiente para gente de preescolar. Vamos a darle y volvemos a reescribir todo el documento. Y al final es lo de siempre, estas funcionalidades de aquí pues tampoco dejan de ser nada más avanzado que prompts, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo aquí añade emojis, pues esto sería lo mismo que si yo me viniera para acá y pusiera añade emojis a todo el texto. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú lo incorporas en una interfaz como esta y es un botón que está accesible para todo el mundo, estás restando fricción para que gente a la que no se le hubiera ocurrido pedirle a ChatGPT añádeme emojis al texto, ahora pueda hacerlo de forma más sencilla. Y creedme que al final son estas tonterías las que acaban marcando la diferencia. En este caso, pues yo no quiero emojis, así que se lo vamos a pedir con el prompt, quita los emojis, ¿vale? Y vamos a ver que efectivamente pues la edición ocurre en tiempo real. Y ahora aquí quedan un par de funcionalidades que me parecen quizás las más interesantes. La primera es esta de aquí, que es darle un acabado final, ¿vale? Imaginad que ya tenéis boceteado vuestro guión, ya habéis elegido el nivel de dificultad, la longitud, estáis de acuerdo con los párrafos planteados, pues ahora podemos darle a este botón para que ChatGPT haga una revisión final de todo el documento y bueno, le dé ese acabado final para mejorar incluso su calidad. Mola. Pero es que además luego tenemos esta otra funcionalidad que es sugerir ediciones, y esto abre de nuevo una interfaz que no habíamos visto hasta ahora dentro de ChatGPT, que es una versión crítica con el documento que nosotros hemos creado, donde se nos van a sugerir diferentes modificaciones que vamos a ver apareciendo pues aquí a la derecha. Como si de repente hubiéramos invitado a un ChatGPT crítico que ha leído nuestro documento, vemos que aquí nos marca que ha añadido 5 comentarios, sugerencias para mejorar la claridad de las analogías, y si nos damos cuenta, pues aquí tenemos diferentes mensajes. Pues por ejemplo, podrías considerar añadir un breve statement sobre cómo entender el concepto es importante para conectar más con la audiencia de forma más efectiva. O por ejemplo aquí abajo pues nos está diciendo que podríamos explicar brevemente cómo esto está relacionado con la forma en la que se aprende en el mundo real y así crear una analogía mucho más clara. Pues a lo mejor esta sugerencia me gusta, le damos a aplicar y vamos a ver que de nuevo el documento se va a modificar, se va a seleccionar justamente esa parte y nos va a incluir esta modificación, esta sugerencia dada por ChatGPT. Con lo cual no, esto no es exactamente los artifacts de Claude, porque los artifacts de Claude al final son estáticos. Tú no puedes entrar a modificar, sino que simplemente es un visor de ese documento que nosotros hemos creado. En este caso, lo que OpenAI está proponiendo es un editor de texto. Y un editor de texto que si lo trabajan bien, pues podría ser muy potente para muchísimos usuarios. Además, recordemos que aquí estamos trabajando con los modelos GPT-4o o de Omni. Y si recordáis el vídeo en el que os expliqué sobre este modelo, recordaréis que el modelo GPT-4o, una de sus principales características es que se trata de un modelo multimodal, que es capaz de generarte tokens de texto combinados con tokens de imágenes y que puede intercalar en un mismo documento textos, imágenes, para crearte pues piezas informativas mucho más ricas. Y ese modelo combinado con este tipo de interfaces pues pueden ser muy potentes. Me pregunto, ¿podemos meterle por ejemplo imágenes generadas por Dalí dentro de este documento? Vamos a probar. Fijaos que no, le he pedido quiero que añadas una imagen ilustrativa y aquí dice inserta aquí una imagen ilustrativa de una montaña con una flecha que bla bla bla.
Sería interesante que aquí DALL-E pues tomara la iniciativa y nos creara esa imagen, pero no lo hace. Y me imagino que aunque el modelo nos lo esté ofreciendo, no podemos... Ah, pues sí podemos añadir imágenes, vale. Sorprendido me hallo. Pues podemos maquetar el documento con imágenes, pero no creadas por DALL-E, sino imágenes que podemos sacar de internet. Y podemos añadir tablas. Voy a pedirle, quiero ahora que generes una tabla de preguntas y respuestas sobre el contenido creado al final del documento. Vamos a darle y en este caso vemos que perfectamente nos puede maquetar una tabla con las preguntas y las respuestas. Si por ejemplo fuéramos un profesor que estuviéramos creando algún tipo de actividad para los alumnos, pues fácilmente podemos crear todo este contenido. Ok, y ahora por ejemplo veo que no hay ningún botón para poder descargar este documento que hemos creado, pero se lo vamos a pedir. Le voy a decir, ¿podría darme un enlace para descargar este documento? Vamos a ver si ChatGPT nos lo facilita. Nos dice que no tiene la capacidad para proporcionar un enlace directo, pero realmente sí podría con el Code Interpreter. Le voy a decir que me lo dé en PDF a ver si se encarga de hacerlo y efectivamente está tirando del Code Interpreter para generar el código y nos ha dado un enlace que ahora podemos clicar. Nos muestra, pues, fijaos, no con la misma maquetación y faltan algunos elementos. De hecho, creo que es como la versión anterior de este documento. No lo estaría haciendo bien. Yo creo que aquí falta mucha iteración para mejorar este sistema. Faltaría algún botón para poder exportar estos documentos. Pero bueno, por ahora, como primer paso, como beta que es, no está nada mal. Pero amigos, la cosa no se queda ahí, porque sabemos que una de las funcionalidades más potentes de los artifacts de Claude, pues tiene que ver con el desarrollo de código. Porque al igual que cuando le pedimos a ChatGPT que queremos crear un documento de texto, nos abre una ventana que es un editor de texto, pues si le pedimos algo como esto, prográmame un script de Python que implemente el descenso del gradiente, si le damos a Enter vamos a comprobar que, de nuevo, nos genera una pantalla, un menú lateral donde vamos a ver el código mostrado y donde efectivamente pues ChatGPT ha hecho su trabajo. Tenemos el chat por la izquierda con toda la información importante que nos quiere contar ChatGPT y a la derecha tenemos el código que ha generado y al igual que antes pues no se trata solamente de una ventana estática de previsualización, sino que realmente podemos entrar aquí y modificar las cosas. Por ejemplo, yo me puedo venir aquí, podemos poner elevado al cuadrado y de repente pues el código que ChatGPT nos había programado pues ahora está mal porque le he metido aquí algo que no tiene nada de sentido. ¿Qué pasa? Que aquí podemos hacer igual que antes, le podemos preguntar a ChatGPT, oye, ¿por qué la Y está elevada al cuadrado? Y en este caso pues ha entendido que eso no era correcto y que tenía que editarlo. Esto está bien, pero bueno, lo interesante aquí es que al igual que antes no tenemos que estar interactuando siempre a través de el diálogo con ChatGPT, sino que tenemos un menú con algunas herramientas que nos pueden ser muy útiles para cuando estemos trabajando con el código. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Podemos añadir comentarios a nuestro código, en este caso el código viene bastante bien comentado, así que no hace falta. Podemos añadir logs, si queremos hacer una depuración de cómo está funcionando, pues automáticamente lo podemos añadir. Podemos usar esto para encontrar bugs, vamos a probar, vamos a darle al sistema y en este caso de nuevo fijaos cómo está optimizando, está mejorando nuestro código, ¿vale? Fijaos que efectivamente ha detectado Y elevado al cuadrado era incorrecto y lo ha cambiado por len de Y y además ha mejorado la eficiencia usando npdot y npsum para las multiplicaciones, lo cual está muy bien. Ha encontrado automáticamente pues los bugs que había en nuestro código. Además de esto pues podríamos también hacer lo que, bueno, hace un par de años se llamaba transcoding, que era modificar el código de programación de un lenguaje de programación a otro lenguaje de programación. Automáticamente pues podemos venir a este slider y podemos elegir, oye, ¿queremos mantenerlo en Python, que es como está implementado actualmente, o queremos pues por ejemplo en C++, lo queremos en PHP, lo queremos en JavaScript, en TypeScript, en Java? Pues mira, en JavaScript. Y automáticamente pues ChatGPT va a reconfigurar todo nuestro código para que implemente el descenso del gradiente como lo teníamos planteado, pero en este caso en JavaScript. Como se ha dejado todos los comentarios sin poner, vamos a darle al botón de añadir comentarios y en cuestión de segundos pues lo tenemos todo implementado. E igual que antes, podemos venirnos para acá y podemos darle a este último botón que es Code Review, que lo que va a hacer es coger nuestro código y, bueno, criticarlo, ¿no? Encontrar esos aspectos que podemos mejorar. De nuevo vemos cómo van apareciendo sugerencias y en cada una de estas sugerencias pues podríamos encontrar algún tipo de comentario que pudiera ser de valor para hacer este código incluso más funcional. Pues aquí por ejemplo nos propone que utilizar la función map pues crea una sobrecarga adicional al colocar nuevos arrays en cada caso y que podemos considerar calcular YPRET directamente usando las computaciones del gradiente para mejorar la eficiencia. Si estamos de acuerdo con este cambio, le damos a aplicar y automáticamente ChatGPT nos va a actualizar todo nuestro código.
Carlos, ¿significa esto que estamos ante el fin de herramientas como Cursor o IDEs de programación como Visual Code con los plugins que conectan con ChatGPT? Yo creo que no. Pensad que por ahora todo esto son herramientas muy rudimentarias, tanto el editor de texto como el editor de código, que están pensadas sobre todo para hacer modificaciones rápidas sobre pequeños scripts o sobre pequeños documentos que haya generado. Para una gran base de usuarios que usan ChatGPT es más que suficiente, pero creo que luego si quieres algo más profesional, evidentemente te vas a mover a herramientas más profesionales que te van a ofrecer, pues en el caso de la programación, el poder contar con una base de código mucho más amplia, con muchos documentos y con, bueno, pues con todas las herramientas que necesitamos. Eso no quita que si esto tiene éxito y si esto funciona, pues OpenAI pueda apostar por seguir ampliando y añadiendo funcionalidades a esta herramienta y que poco a poco empiecen a competir en el mercado de otros jugadores. Esta herramienta pues tiene proyección para ser algo mucho más grande y podría serlo, o podría quedarse como ha sucedido con otros grandes proyectos de OpenAI, como podría ser la GPT Store, los GPTs, DALL-E, pues en un proyecto que sí, que promete, pero nunca llega. Aún así, en el presente, pues le damos la bienvenida a Canvas y celebramos que lleguen nuevas funcionalidades a ChatGPT que nos aporten valor, que nos resten fricciones y que nos permitan, ya sean a través de mejoras de modelos o mejoras en la interfaz de usuario, pues poder sacar y exprimir más el potencial de la inteligencia artificial. Y toda la evolución y proyección que pueda tener esta nueva herramienta y ChatGPT y todas las novedades de inteligencia artificial os la estaré contando aquí en .csv Lab. Tenéis un par de vídeos aquí para ojear y chicos y chicas, nos vemos con más inteligencia artificial aquí en .csv. Nestlé, a gusto con la vida. La semana pasada, Vercel, la compañía de software, publicó una de las demos de inteligencia artificial y programación más interesantes que yo haya visto. Se trata de V0 Chat. Es la evolución del sistema V0 que ya Vercel presentó hace unos meses y que en aquel entonces era, bueno, una propuesta interesante, una prueba de concepto, pero no era algo que pudiéramos llamar un producto que realmente pudiera aportar valor a los programadores. Esto ahora ha cambiado. Y ha cambiado porque lo que tenemos ahora entre manos es esta versión V0 Chat, que es la reconversión de V0 a un sistema más parecido pues a los modelos de ChatGPT, de Claude y similares. De hecho, si tenemos que decir que se parece a uno, es a Claude de Anthropic, y ahora comprobaréis por qué. ¿Y qué nos aporta esta herramienta? Pues poder comunicarnos con lenguaje natural para pedirle a la inteligencia artificial que nos programe interfaces, herramientas, aplicaciones, bueno. Mirad por qué es una pasada. Vamos a pedirle algo sencillito, pues por ejemplo un gráfico de tarta que sea interactivo donde pueda modificar los atributos. Le damos a enviar y en este caso pues tenemos la típica interfaz de chat similar a otros sistemas de inteligencia artificial, pero fijaos cómo de repente, ojo, se acaba de crear algo muy parecido a los artifacts de Anthropic. Y a mano derecha tenemos pues la previsualización, igual que el sistema de Claude, donde se ha generado el código. Fijaos cómo la inteligencia artificial pues está escribiendo el código y en tiempo real podemos ir observando. Esto creo que viene de la mano de lo modular que es el lenguaje de React, que es con lo que se está programando todo esto, que permite previsualizar cómo se van cargando los elementos en tiempo real, cómo se van implementando, y me parece súper interesante. Fijaos cómo tenemos pues nuestro gráfico de tarta perfectamente implementado con los diferentes valores. Podemos modificarlo pues 600 y vemos cómo se va cambiando de forma interactiva. Podemos añadir nuevos valores, 100% funcional. Y ahora a la izquierda pues podríamos continuar en el chat iterando sobre lo que hemos creado. Pues ahora el pedido, quiero que tenga un aspecto más futurista, con fondo negro, más colorido, y que el ejemplo inicial esté relacionado con frutas y que utilice emojis. Y veis cómo ahora empieza a iterar y empieza a introducir los cambios que le hemos pedido, ¿no? Y perfectamente implementado vemos pues nuestro gráfico de tartas con estilo de neón futurista, con diferentes atributos, podemos modificarlo, todo funcional. Entonces, ¿qué tan potente es esta herramienta? Pues vamos a probarlo. Vamos a pedirle algo un poquito más complejo. Por ejemplo, le voy a pedir que implemente un editor de vídeo con varias funcionalidades y un aspecto moderno. Vamos a darle a enviar y vamos a ver cómo trabaja V0 con este único prompt. Nos responde que entiende que queremos un editor con varias funcionalidades, abre de nuevo el artifact y empieza a implementar a la derecha. Y es una auténtica pasada ver cómo va desarrollándolo todo, ¿no? Fijaos, bueno. Vale, nos ha creado un pseudo editor donde nosotros podríamos tener aquí un vídeo cargado y podríamos tener diferentes funcionalidades como cortar, dividir, deshacer y exportar. Y abajo nos plantea una especie de línea de tiempo que no es que sea muy funcional, parece más bien
un mockup porque ya los clips, bueno, pues no los puedo ni modificar ni nada. Entonces, como punto de partida está muy bien, me molaría poder cargarle algún vídeo, pero como esto es un sandbox, creo que no nos va a dejar. Vamos a intentar iterar y vamos a pedirle ahora que la línea de tiempo pues sea funcional. Veo que la línea de tiempo incluye clips a modo de mockups, pero me gustaría que fuera funcional. Podrías implementarla con un clip de prueba, un playhead, que es como la cabeza esta que podemos mover en la línea de tiempo, y la posibilidad de añadir cortes. Le damos a enviar y a ver cómo trabaja. Empieza a implementar y fijaos cómo en este caso una cosa interesante es que vuelve a generar el código desde cero. Esto difiere de cómo trabajan herramientas como Cursor, que quien la haya probado sabe que a la hora de implementar los cambios, una forma más eficiente de hacerlo con los modelos del lenguaje es a través de los diff, ¿no? De meter modificaciones en las líneas de códigos que ya tenemos escritas, pues añade o quita estas líneas, y que estos son los únicos cambios que se introducen, lo cual te permite iterar y modificar ese código y no estar reescribiéndolo desde cero, lo cual suele ser bastante más ineficiente y más lento. Vemos que se ha producido algún tipo de error, vamos a reintentarlo, vamos a darle de nuevo, vuelve a reescribirlo desde cero. Vuelven a aparecer todos los elementos que teníamos antes y la línea de tiempo pues tiene mejor pinta. Podemos... ahí está. Vale, sigue siendo bastante sencilla, pero fijaos que ahora sí es más funcional que lo que teníamos antes. Tenemos una especie de línea de tiempo. Si le doy al play a esto, fijaos cómo se reproduce el playhead, que sería como la línea que se va moviendo cuando le damos al play, se está reproduciendo, y podríamos añadir cortes que idealmente esto debería de separar los clips en diferentes partes, pero... ¡wow! Y si, por ejemplo, le doy a añadir corte en la posición del playhead, ¿esto funciona? Funciona. Fijaos cómo todos los componentes se han conectado y la funcionalidad pues tiene sentido, ¿no? Vamos a ver si le doy a cortar, ¿qué hace? Vale, cortar no debería hacer nada, simplemente añadir corte dentro de la posición del playhead. Bastante bien. Fijaos que esto lo hemos conseguido en la segunda iteración de nuestro sistema, en la V2. Vamos a añadirle un poco más de complejidad. Vamos a pedirle que lo haga incluso más avanzado. No voy a decirle nada más que ¿podrías hacer una implementación más avanzada y profesional? Y la IA nunca se queja. Lo que nos dice es, por supuesto, puedo crear una implementación más avanzada y profesional. Bueno, eso lo vamos a jugar nosotros, pero por ahora pinta bastante bien. Empieza a generar, se empiezan a renderizar cada uno de los componentes. En este caso lo ha generado como un elemento diferente, lo ha llamado Advanced Video Editor, y vemos que ahora tenemos más herramientas, ¿no? Nos ha creado como diferentes menús, editar, efectos, audio. Ahora vamos, cuando termine, a ver qué esconde cada uno de estos. La línea de tiempo también se está generando. Ciertamente el look and feel de la herramienta pues un poquito más profesional ahora que antes. Tenemos los menús, ¿vale? Vemos que cambia de tamaño, esto habría que arreglarlo. Tenemos diferentes filtros que podríamos aplicar. Audio, podemos seleccionar archivos para cargar como música de fondo, a ver, vale, y me deja subir archivos. Voy a subirle esta canción que tengo por aquí, la ha subido y no sé exactamente, sería increíble, que de repente empezara a sonar la música de fondo, pero creo que le estamos pidiendo demasiado al sistema. Y tenemos la línea de tiempo, podemos mover la cabeza de reproducción, podemos borrar el clip, o al menos eso pretende ser este icono. Tenemos lo que creo que es zoom también implementado, bastante bien. E incluso esta herramienta nos podría servir para prototipar incluso aplicaciones webs un poquito más complejas. Mirad, me voy a ir a ChatGPT, que tampoco es que sea súper compleja, pero para que veáis la posibilidad que nos da esta herramienta. Voy a hacer una captura de pantalla y voy a aprovechar que aquí nos dejan agregar imágenes como parte del input para que la inteligencia artificial observe con su multimodalidad qué es lo que le vamos a pedir, y sin muchas instrucciones le pido que me implemente la interfaz. Fijaos qué interesante que ha entendido que se trata de la interfaz de ChatGPT cuando en ningún momento se lo había comentado, y fijaos cómo funciona, ¿no? el OCR de entender qué hay en la imagen que le hemos pasado, que es incluso hasta los chats que tenía aquí en la barra de la izquierda. Y vemos que el único error que ha tenido pues tiene que ver con uno de los iconos de una de las fuentes. Se lo voy a poner aquí para ver si lo corrige. Vale, admite el error y vuelve a generarnos toda la interfaz. Ahí lo tendríamos. Vamos a iterar ahora para acercarlo un poquito más. Pues le digo, los colores no serían correctos y además también faltan los avatares del menú de la izquierda, ¿no? Los elementos que aparecen por aquí. Lo ha solucionado con iconos, pues bastante bien, mucho mejor que antes. Y vemos como ahora tenemos un prototipo de la interfaz, pues que se acerca a lo que sería el ChatGPT original, y solo faltaría ver si funciona. Si le pongo aquí hola, efectivamente esto está completamente desconectado, simplemente la interfaz. Así que vamos a pedirle que lo haga funcional. ¿Podrías hacerlo funcional para que el chat con la IA funcione? Cuarta iteración, vuelve a implementarlo. Tenemos ahora sí el chat aquí y vamos a probar. Hola.
¿vale? Y vemos que efectivamente pues aparece mi respuesta dentro de la interfaz de chat y aparece una respuesta obviamente hardcodeada de la inteligencia artificial respondiendo hola. Yo creo que si vuelvo a preguntar ¿qué tal? Yo creo que aquí respuesta simulada a qué tal, ¿no? Es como a cada pregunta pues siempre vamos a tener la misma respuesta, pero fijaos que funciona. A esto, para ser un prototipo funcional, pues solo le faltaría conectarlo en el backend con la API de OpenAI y ya tendríamos una especie de ChatGPT creado por nosotros, aunque realmente ha sido generado por la IA. Lo seguimos haciendo más complejo. Ahora quiero que implementes un pop-up de pricing que salte cuando el usuario envíe 3 respuestas. Ha creado la interfaz, no he visto que haya creado el pop-up, pero vamos a ver si salta. Tal. Bien. ¡Uy! Mejora tu experiencia, desbloquea todo el potencial de ChatGPT con nuestro plan Premium. Acceso ilimitado a ChatGPT, respuestas más rápidas y acceso prioritario a nuevas funciones. Fijaos que en este caso, toda esta información ya no se la hemos pasado nosotros por una imagen dada como input de cómo es el ChatGPT original, sino que se lo ha inventado o lo tendría a lo mejor memorizado de su entrenamiento, pero fijaos que es coherente a toda la interfaz que nosotros hemos creado y así podríamos seguir iterando. Solamente estamos en la versión 5 y ya tenemos un prototipo bastante funcional de lo que podría ser un ChatGPT real. Y la verdad que es una pasada porque si recordáis fue hace 2-3 años, de hecho creo que 3 años si no me equivoco, ¿vale? Febrero del año 2022 cuando publiqué este vídeo en el canal principal donde yo jugaba con lo que era Codex en aquel momento, que era la versión de programación bastante similar a lo que estamos probando hoy, pero más primitivo, de GPT-4 de OpenAI, ¿no? La versión de programación. Que me pasé 20 minutos en este vídeo, que realmente fue más tiempo, dándole instrucciones a partir de lo que yo sabía como programador, pues que tendrían que ser las instrucciones lógicas para que poder implementar una versión funcional del juego del Wordle, ¿vale? En aquel momento esto era impresionante. Y ahora, si yo me vengo a esta herramienta y le pido que implemente el juego del Wordle, pues simplemente con un prompt, pues vamos a ver que seguramente V0 no va a tener ningún problema a la hora de implementarlo. Y listo. Vamos a ver si está 100% funcional. Pues no me acuerdo ni cómo se jugaba. Gatos. Le damos a Enter. Vale. Torre. Cerro. Ah, pues mira, casi acierto la primera. Perro. Vamos. Ganaste. La herramienta, como veis, es bastante funcional y podéis acceder a ella para probarla de forma gratuita. Os va a dejar hacer pues unos 8, 9, 10 intentos y luego ya os dirá que se os han acabado las peticiones diarias. Si queréis seguir utilizándola, hay una versión de pago por $20 al mes, pues un precio bastante similar a Claude Anthropic, a ChatGPT y todas estas inteligencias artificiales. Y la gran pregunta es si realmente como herramienta pues es algo que pueda aportaros valor. Yo creo que V0 en su versión actual es mucho más interesante que lo que teníamos hace unos meses, porque esto ya no es un prototipo donde, bueno, te están demostrando un caso de uso de la inteligencia artificial, sino que verdaderamente se le puede sacar partido, se puede conseguir prototipos que luego te puedes llevar tú y empezar a trabajar con ellos, o puedes, por ejemplo, implementar diferentes componentes que integrar en tus propias aplicaciones. Pues, por ejemplo, le he pedido, quiero un componente de un lienzo donde pueda trabajar con nodos al estilo Config UI, podré arrastrar los nodos y conectarlos a través de sus atributos. Le he pasado una imagen también de referencia. Vamos a darle a enviar y vemos cómo empieza con algo muy sencillito, pero vamos a seguir iterando. Y como veis, con muy pocas iteraciones, pues ya tenemos una interfaz que se parece bastante a lo que le hemos pedido, ¿vale? Con nodos, muy similar a Config UI. No sé si está bien implementado lo de poder conectarlos. A ver, no sé si podemos conectar esto con esto. Vale, todavía faltaría seguir haciendo más trabajo, pero como punto de partida está muy bien. Y este es un código que ahora podríamos coger y llevárnoslo a nuestras aplicaciones para seguir trabajando y seguir construyendo. El punto es que esto es V0 y no sé si en un futuro Vercel se encaminará a tener una versión 1, una versión 2, V1, V2, V3 de este sistema, pero quiero que pensemos entre todos qué pasaría, por ejemplo, si de repente los modelos del lenguaje con lo que se está ejecutando esto hoy en día fueran mucho más rápido, que esto fuera generación instantánea, que tú pudieras pedirle al sistema y que en tiempo real se fuera modificando, que no tuviéramos que esperar estos pocos minutos que hay
entre cada generación. O pensad qué pasaría si de repente el modelo del lenguaje que está por detrás ya no fuera Claude 3.5 o GPT-4, sino fuera GPT-5 o las siguientes versiones que van a llegar, versiones más inteligentes. ¿Qué pasará cuando esto sea tan rápido que ni siquiera tengamos que depender de una persona que esté aquí probando y metiendo prompts, sino que podamos tener a un sistema de inteligencia artificial generando interfaces, generando código 24/7 y que entonces podamos elegir de un enorme catálogo o que directamente se vayan generando las herramientas en tiempo real según las necesidades del usuario que las utilice? En todo esto es lo que tenemos que estar pensando cuando trabajamos con herramientas como estas, porque hace 2 años estábamos aquí, en una versión muy prematura de lo que tenemos ahora, que es una versión muy prematura de lo que vamos a tener en los próximos años. Por ahora, una herramienta que está a caballo entre ser un prototipo y un producto comercial que podáis sacarle utilidad. Vosotros lo probaréis, vosotros me diréis, pero creo que es una muy buena demostración del camino que se está recorriendo. Una herramienta que cuando le pongamos un prompt como este, confeti y fuegos artificiales para decirle adiós a mi audiencia al final de este vídeo, nos genere algo como esto. No tengo ni idea de lo que va a salir, pero bueno, puede ser un cierre gracioso. Gracias, audiencia, espero que os haya gustado el vídeo y demos inicio a la celebración. Oh, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! Si te ha gustado, no dejes de compartirlo. Si te gustan las novedades de inteligencia artificial, suscríbete al .csv Lab y nos vemos con más inteligencia artificial aquí en este canal. ¡Chao! La vida es jugar a encontrarse. Honor 200. Captura el momento. Comparte el recuerdo. Hola a todos y bienvenidos. En este vídeo vais a aprender paso a paso y con todo tipo de detalles cómo funciona ChatGPT. ChatGPT es una herramienta relativamente fácil de utilizar, pero que muy pocas personas entienden y aprovechan todo su potencial. El objetivo de este curso es que aprendas a utilizar todo lo que ofrece, tanto si partes desde cero como si ya tienes experiencia utilizándolo. En la formación vamos a ver cómo funciona ChatGPT, cómo interactuar mediante texto, cómo interactuar con archivos, herramientas avanzadas y finalmente veremos cómo ganar dinero utilizando ChatGPT. Esta formación la